Hello guys, welcome back to our channel for another video. Today is day 4 in Bali. So today we are traveling to Nusa Penida and it's going to be a long day for us. So we caught up early around 5:30 in the morning and अभी बस almost 7 बज रहे हैं and we are just waiting for the driver. So let's see how it goes. Nusa Penida is one among the 3 major island bodies near Bali. It is the largest and most exotic of these 3. The island is known for its stunning cliffs, crystal clear blue waters and unique rock formations. यहाँ पर बहुत सी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं. नूसा पेनिडा जाने के लिए यू नीड टू टेक अ फेरी फ्रॉम सैनौर, जो कि कोटा से अराउंड 13 किलोमीटर्स है. Once you reach the coast of Senor, the next step is to book a suitable boat for your transfer from Bali to Nusa Penida. यहाँ से आपको 2 टाइप की बोट्स मिल जाएंगी, लोकल वंस एंड द फास्ट वंस. लोकल बोट्स आर चीपर, अराउंड 320 INR, but it will take you 1.5 hour to reach the destination, while the fast boats can cost you around 1300 and takes about 30 minutes to reach the destination. आप अपने बजट के हिसाब से फेरी सिलेक्ट कर सकते हो. बोथ द जर्नीज आर सेफ एंड वर्थ एन एक्सपीरियंस. हमने वीआईपी सर्विसेज से फुल डे नुसा पेनिडा टूर लिया था, जिसमें कि होटल ट्रांसफ़र से लेके फेरी टिकट्स, नुसा पेनिडा की 4 मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस, इंटरनल ट्रांसफर्स एंड लंच वाउचर्स इंक्लूडेड थे. इट कॉस्टेड अस अराउंड 8000 INR पर पर्सन. ओनली थिंग वी डिडंट लाइक वाज दे प्रॉमिस्ड अस अ प्राइवेट टूर, लेकिन वहाँ पहुँच के हमें पता चला दैट वी हैव टू शेयर द कैब विद अनदर फैमिली. तो आप ये सब चीज़ देख के ही अपनी सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना. Now coming to how to roam within Nusa Penida, once you reach the destination for your exertion, आप स्कूटी या बाइक हायर कर सकते हो. आपको स्कूटी इजीली 400 to 600 रुपीज़ INR पर डे के अराउंड मिल सकती है, या फिर आप कैब ले सकते हो जिसका प्राइस कैन वेरी फ्रॉम 1500 to 3000 INR पर डे अकॉर्डिंग टू द सीजन. Finally reached Nusa Penida. The journey took us around 3 hours, including the ferry time plus the driving till here. Crystal Bay Beach is one of the top destinations of Nusa Penida. This bay is a secluded cove with a 200-meter stretch of sand on west coast of the island. इस बीच पर आने के लिए कोई एंट्री फ़ी रिक्वायर्ड नहीं है, बट कार पार्किंग के लिए आपको 5000 INR पे करना होगा, which is 30-40 Indian rupees. The bay itself offers a sandy area in the middle and stunning coral reef on the fringes. यहाँ पर आप नूसा पेनिडा की वन ऑफ द बेस्ट स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस कर सकते हो. स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट आपको लोकल शॉप से मिल जाएंगी, जिसका कॉस्ट विल बी अराउंड 500 to 800 INR पर पर्सन. So after spending around half an hour on the beach, our next destination was Angels Billabong, which was around 30-40 minutes drive from the beach. It is a natural infinity pool with super clean waters, seemingly framed by large cliffs from opposite side. The Angels Billabong is a place of dreams.
It's called Angel's Billabong because according to local mythology, this is where an angel came to bathe. But keep in mind, this place can be very dangerous for swimming during the high tides. नेक्स्ट फेमस प्लेस टू विज़िट वॉज ब्रोकन बीच। इसके लिए हमें ड्राइव नहीं करना पड़ा था क्योंकि ये दोनों स्पॉट सेम लोकेशन पर ही हैं विद अ स्मॉल हाइक। The highlight of the cove and the reason it is called Broken Beach is due to the archway that wraps around the bay, allowing water to flow in and out from the ocean. Broken Beach is another reason to answer if Nusa Penida is worth visiting. Broken Beach takes you to a marvelous high-standing arc view with no means to get down near the water body. But people come here for the view and to imagine how it all must have happened. The natural arc at Broken Beach offers breathtaking panoramic view of the surrounding landscape. Visitors can marvel at the azure water of ocean, the rugged cliffs, and the dramatic coastal scenery. The picturesque setting is a popular spot for photography enthusiasts and nature lovers. After these stunning views, it was time to break for lunch at Seblu Restaurant and Bar. This place was around 50 minutes drive from Broken Beach. The lunch voucher was included in our package. इसमें आप एक drink and एक any dish select कर सकते हो from their menu. Food here was decent and the view was refreshing. Our last stop for the day was Kalinkon Beach, which is the most famous place in the Nusa Penida. You must have seen this place on Instagram reel or post. The popular T-Rex cliff belongs to this beach. Fun fact, Kalinkon translates into pinky, which means little finger of our hand. Many people say it is named so since sometimes the place looks like giant's pinky finger. You will find limestone formation, unique zigzag coastline and thrilling trek down towards the beach. हमारे पास time limited था, so we could not go down to the beach. You can choose to walk half the way down to the hike and find a spot with lesser crowd and magical view right in front of you. Or you can get all the way down to really experience the place in all its glory. The full hike will take you at least 50 minutes to cover, but it is worth it. But remember, do not try and hike down towards the beach when it is sunset time. The waves get really high, roaring and dangerous as the sun hides within the ocean. Stay at the viewpoint and experience the magical sunset. हमने नूसा पेनिडा का 1 डे टूर लिया था, बट अगर आपके पास एडिशनल डेज हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर स्टे करना ताकि आप यहाँ की स्टनिंग लोकेशंस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको। 1 डे टूर टू दिस प्लेस कैन बी रियली टायरिंग एज वी वर रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दैट वी कैन कैच आर फेरी इन द इवनिंग। ऑल्सो यहाँ स्टे करने का एक और बेनिफिट ये है कि आप इन लोकेशंस को अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग तक एक्सेस कर सकते हो एंड इन लोकेशंस पर आपको लेस क्राउड मिलेगा।
if you ask us, is it worth visiting Nusa Penida? The answer depends on what you are looking for. If you are hoping to find a quiet place to relax and enjoy the natural beauty of Indonesia, then Nusa Penida is definitely worth a visit. That's it for our day trip to Nusa Penida. Hope you enjoyed it. Also, I'll see you in another video. If you are liking our travel videos, do let us know in the comment section. And if you are new to our channel, don't forget to subscribe us.